ये जो जंगल आपको दिख रहा है, ये जंगल दूर से तो जंगल दिखता है, पर जब हम अंदर घुसेंगे तो काफ़ी कटाई हो रही है, काफ़ी जंगल उतना घना नहीं है जो पहले हुआ करता था। मोर जानकारी रहा तब भले जंगल में बहुत कुछ लकड़ी रहा, बांस वगैरह रहा है, और बहुत कुछ कांटा पीटा एक जग आदमी जा नहीं सका उमर। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तैसे तैसे जंगल की घटनाएं आ रही से इसमें सेवा सत्कार नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग तो जैसे तैसे अपना चला लेंगे, लेकिन आने वाले बच्चे की पीढ़ी में ज़मीन में कुछ नहीं उगेगा। When we came to India together with our partner TNC India, we scouted for a landscape and finally we found Kabirdan landscape with the support, the endorsement of the government of Chhattisgarh. सबसे पहली बात तो चुनौतियां बहुत आती हैं हमारे काम में, क्योंकि हमें समुदाय के साथ मिलकर काम करना होता है और मुझे ऐसे लगता है कि हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वो चुनौती हम पार कर जाते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। एहन ऐसे लगी उनमान बढ़िया बताइन राय बताइन का है करहो का नहीं करहो, ऐसे कही ता होएला हमार काबर नहीं करवो, हमार गाँव में विकास होना चाहिए। Our vision for the landscape is to restore land and forest in balance with communities living there, so that people also have better livelihoods, better opportunities for economic gains and business development. So really like restoring the balance between nature, agriculture, people and business opportunities. Seeing is believing. If you just talk, there's a limit to which what people will accept and replicate, because they should also know how to replicate it. So we bring people from one village, for example, interested groups, to another village where something nice is happening, and vice versa. We also take them to other villages. So these exposure visits unleashes inspiration, and it allows people to come up with new ideas. कांकेर में गए ना तो हम देखें बहुत जगह देखें, तो फिर वहाँ जो मिस्त्री लोग रहा, वैज्ञानिक लोग तेन दिखाएं कैसे कैसे बांधना है, कते कते टाइम में का करना है, तो ला के खेती अच्छा लगी हमला तब ये थोड़ा दिल चाहती ला के खेती करते। हमारा पूरे सपोर्ट समर्थ संस्था के सरमन के सपोर्ट रही से बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। हम लोग सबसे पहले प्रेरणा तो ये है कि ये दीदी लोग हम लोग को बताए, उसमें तो हम सीखे, हम सीखे, उसके बाद हम अपने समूह को सिखाए, उसके बाद वो समूह वाले हैं वो अपने अपने परिवार में, अपने अपने गांव, अपने अपने रिश्तेदार में सिखाए। तो यहाँ हमको जितना भी प्रेरणा मिले सब कबीर किसान से ही मिला। They see an opportunity. They are inspired by something and by a training, by seeing something, and we help them to turn that into actions. आपे मन के बताए रास्ता के अनुसार से हम चलना चाहत हम चलत हम, साथ ही साथ एक दूसरा बता करके वो रास्ता मत चलाए कोशिश करबो। अब ये रास्ता में चलबो तभी संभव है कि आने वाला भविष्य में हमार आने वाला पीढ़ी जिंदा रह सकत है और हम जिंदा रह सकत है। Social return is basically uniting people for landscape restoration, and we have converted this to an Hindi word called Samajik Poonji. So with this word Samajik, they understand that it's related to something called a group, something associated with their group and culture, and with time how we also speak to them about these four returns. क्योंकि जो इसको करने वाले हैं, जो उस पर डिपेंड है, वो अगर एक साथ नहीं होंगे, उसमें उनमें समझ नहीं होगी, उनमें कौशल नहीं होगा, उनमें ज्ञान नहीं होगा और वो एक संस्थागत रूप से नहीं आएंगे, तो इसका आगे चलकर कोई भविष्य नहीं हो पाएगा। पर हमारा घर तरफ ले भी सपोर्ट मिले, जैसे बहू नहीं जाए तो सास जात है, सास नहीं जाए तो बेटा जात है, वैसे मिलजुल के हम बहुत अच्छा 2 सप्ताह में बहुत जल्दी 1.5 कुंटल खरीद लेना हमन।
So these farmers have WhatsApp groups in which they communicate with each other. They share their problems with each other, problems related to crop, problems related to pest. They reach out to each other as well as to my team members. And if the solution to that problem doesn't exist with among themselves or with my team member, the people from my team reach out to resource persons we have at various institutions, for example at NIPHM or at the local university IGKV, and then bring the solution to these farmers. And now they know for sure that their well-being is actually connected with the forest around them and the things they're doing on the land. So the nature returns are coming in. इलामन बच्चा भी की तरीके से रखें तभी तो ऐसे छोड़ देते हैं तो कहाँ बचती है। मैं हाँ महाराष्ट्र गिरे हूँ, दिल्ली गिरे हूँ, ओला देख के मैं हाँ फसल लगाए गए हूँ, माने आम लगाए हैं, आंवला लगाए हैं। हाँ ओला उमला देख के मैं हाँ मैं सीख के यहाँ आके मुर्गा में लगाए हैं मैं। और दूसरा आदमी को मैं गला बोला था मोरे जी से मोहर वो काम करो ऐसे कि मैं बोलते रहे। We are promoting these kitchen gardens and nutrition gardens so that people have to procure less and less vegetables from the market. So that doesn't add to their income, but definitely that saves a lot of amount where they are spending. So it leads to savings. In the economic zone, how we are currently looking at financial return is we are trying to minimize their investments. For example, rather than going for multiple types of chemical fertilizers, if they go for biofertilizer, their cost decreases and the cost of chemical fertilizer that they need to procure drastically decreases because the usage of biofertilizer is leading to decrease in the quantity of chemical fertilizers that they are using in the field. When you really zoom out to a landscape level, where you have big players like the elected members of the politics or the civil services who are actually implementing a lot of the people's agendas, we really need to work with all of them together. But the foundation lies in community institutions, which is at the core, and then seeing how other already established institutions can actually plug in and work together. How can we have a smooth communication between all these different groups? So that is what we are targeting. Gotcha.